Assalamu alaikum, this is Nayab and today the topic you are going to learn is report writing. Report writing is a really important topic because you are frequently going to be asked to write incident reports or a research report in your advanced semesters, and sometimes you might be asked in clinicals to write a nursing report as well. So it would be better if you have an idea of what report writing is and how you can write a report. What is report writing? Starting with what a report is. So a report is a formal document that elaborates on a topic using facts, charts and graphs to support its arguments and findings. A report is a document that presents information in an organized format for a specific audience and a specific purpose. So it must be written in an organized manner. An elaborate report prepared with evaluated facts helps solve complex problems. When managers come across certain business situations, they ask for comprehensive and well thought out report that can help them design business plans. A report that is well prepared can help solve complex problems. Sometimes in business you might come across some kind of problem, and then the managers ask the workers to write, or the employees to write a well thought report that can help them design business plans, like what are the possible situations, what is the situation, what is the problem, what are the possible solutions for these situations, and what you can help them to tackle the situation. If you are writing a report in the workplace, check whether there are any standard guidelines or structures that you need to use. Sometimes the place you are working in will have their specific standards or guidelines or a specific format for report writing. For example, if you are working in a certain hospital, there might be a specific format or a specific document for incident report writing, or there might be a specific guidelines, specific standard in which you will be asked to write the report. But otherwise there is one standard format for report writing as well that we are going to discuss later. Now, what are the elements of report writing? There are different types of reports and each has a specific structure, usually known as elements of the report. The parts of the report which are necessary in which you are going to write your report are known as the elements of the report. Every report starts with a title page and a table of contents, after which come the main section, the executive summary, abstract, introduction, discussion and conclusion. You are going to start with the title page in which you are going to place the table of contents, like what things you are going to discuss in your report, and then you will start writing your report. Executive summary or the abstract. This section presents a brief overview of the report's content. You should present the key points of the report in this section. As the name indicates, it is the summary of your whole report. Abstract is known as the summary of your whole report. Whatever you have discussed in your report, whatever you have mentioned in your report, all of these things you are going to present a brief summary of it in the abstract. Include the purpose of your report and emphasize conclusions or recommendations. You are going to include the purpose of your report कि आपने ये report क्यों लिखा है, किस वजह से लिखा है, आपके पास कंक्लूजन्स क्या आए हैं और कौन कौन सी रिकमेंडेशंस है, ये सारी आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट में मेंशन करनी है. इंक्लूड ओनली द एसेंशियल और मोस्ट सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट योर थ्योरीज एंड कंक्लूजन. As a summary is 1/3 of your report, or an abstract is mostly 150 to 250 words, so you are going to keep it really short and concise and to the point. You just have to write the most significant or most important information in your abstract. Don't beat about the bushes. इधर उधर की बातें लिखने की ज़रूरत नहीं. You just have to keep your abstract as clear and concise as possible. Follow the same sequence of information that you have used in the report. Keep the summary length to 10 to 15% of the complete report. Try not to introduce any new information or point in the summary that you haven't covered in your report. आप एब्स्ट्रैक्ट में सिर्फ वही चीज़ें मेंशन करेंगे जो आप अपनी रिपोर्ट में डिस्कस करने वाले हैं और जो आप अपने रिपोर्ट में मेंशन करने वाले हैं. जो चीज़ें आपने अपने रिपोर्ट में मेंशन की होगी, सिर्फ वही चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट में लिखेंगे. ऐसी कोई बात भी एब्स्ट्रैक्ट में नहीं होनी चाहिए जो बाद में आपके रिपोर्ट में ना हो लेकिन आपने एब्स्ट्रैक्ट में मेंशन की हो. द समरी शुड कम्युनिकेट द मैसेज क्लियरली एंड इंडिपेंडेंटली. एब्स्ट्रैक्ट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज, मीनिंग कि आपका मैसेज क्लियरली रीडर तक पहुंच जाए. जो भी बंदा पढ़ रहा है उसके आप
उसको आपके रिपोर्ट में जो भी मेंशन होने वाला है उस की समझ आए, क्लियरली वो उसको समझ पाए। मतलब एक शॉर्ट समरी जिससे आपकी पूरी रिपोर्ट को वो आसानी से समझ सके कि आपने अपने रिपोर्ट में किस बारे में बात की है, आपके रिपोर्ट राइटिंग का पर्पस क्या है, किस वजह से आपने ये रिपोर्ट राइटिंग की है, अब कौन सी कंक्लूजन है, आपके पास रिज़ल्ट क्या है, डिस्कशंस क्या हैं, रिकमेंडेशंस क्या हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली एंड कंसाइजली ब्रीफ फॉर्म में आपके एब्स्ट्रैक्ट में मेंशन होनी चाहिए। Now coming towards the introduction part, the introduction section should briefly describe the background and context of the research you have done. If you are writing a research report, the introduction section should include आपके introduction section में brief background होना चाहिए. For example, you are writing about a certain disease. You are writing a report on a certain disease. So you should write about that disease, the background of that disease, then the prevalence of that disease. Just a brief information, whatever you have in your mind, whatever you have the knowledge of that disease, you would write it in the introduction section. Describe the change, problem or issue related to the topic. First you are going to briefly discuss what the disease is, the background of that thing. Then you are going to describe the change, the problem or issue related to the topic, that you have selected this disease, why you have selected this disease, what is the problem, what is the issue related to it. It might be the most prevalent disease, or there might be another purpose that you have selected it. Define the relevant objectives and purpose of the report. Now you have to write why you are writing the report, what are the aims and objectives of your report writing. Give hints about the overall answers to the problem covered in the report. Now you are just going to give hints about the answer. Do not give the whole answer in your introduction. You are just going to give the hints about the answers that you have covered the problems in your report as well. Comment on the limitations and any assumptions you have made to get to the conclusion. And then you are going to write the limitations or any assumptions that you might have come across. जब आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तब आप लिटरेचर रिव्यू भी बहुत सारा करते हैं, आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उस इन्फॉर्मेशन को लेके आप जो असम्पशंस बनाते हैं या जो लिमिटेशंस बनाते हैं, या आपको जो लगता है कि इस टॉपिक में इस जगह पर लिमिटेशंस है, या जो भी आप असम्पशंस बनाते हैं, जिस कंक्लूजन पे आप पहुंचते हैं, उसको भी थोड़ा सा ब्रीफली आपने कमेंट करना है या थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करना है उसको भी इंट्रोडक्शन के एंड में. Now the discussion. This section serves two purposes. It justifies the recommendations and it explains the conclusion. In the discussion section, we mainly have two purposes. We justify the recommendations. जो आप रिकमेंड कर रहे हैं, जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है और उसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस आप रिकमेंड कर रहे हैं, आपने उसको जस्टिफाई भी करना है कि क्यों इस प्रॉब्लम का सलूशन ऐसा क्यों होना चाहिए, या ये सलूशन आप क्यों तजवीज़ कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के लिए, वाई आर यू रिकमेंडिंग इट. इट एंड एक्सप्लेन्स द कंक्लूजन, और आप जिस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं उस कंक्लूजन को भी एक्सप्लेन करते हैं. While you are writing the discussion section, make sure you do the following. Present your analysis logically. आपने जो भी इंफॉर्मेशन एनालाइज की है लॉजिकली उसको प्रेजेंट करना है. इफ़ नीडेड, डिवाइड द इंफॉर्मेशन अंडर अप्रोप्रिएट हेडिंग्स टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. समटाइम्स आप जो है आपने जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपकी, उसको आप पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं अपने रीडर की कन्वीनियंस के लिए, ताकि उनको ईज़िली समझ आ सके. फॉर एग्ज़ाम्पल, you are writing your report on tuberculosis, and then in the discussion section you are going to recommend how we can prevent this from spreading. So you can write, आप headings में इसको डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट हेडिंग आप दें कि डिक्रीज़ ओवरक्राउडिंग कम करके जो है तो हम इस डिज़ीज़ को टैकल कर सकें. राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट इट. देन उसके बाद आप इम्प्रूव न्यूट्रिशन. While you are writing the discussion section, make sure you do the following. Present your analysis logically. Whatever information you have analyzed, you should present it logically. If needed, divide the information under appropriate headings to improve readability and ease of understanding. आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ योर रीडर्स, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. For example, you are writing a report on tuberculosis, and in the discussion section you are going to give a few suggestions or recommendations on how to decrease its prevalence. So you can divide that information into headings as well.
The first heading can be decrease overcrowding, and then you can write a few sentences about how decreasing overcrowding would decrease the prevalence of the disease. Then the second heading can be by improving nutrition. The third heading can be by improving sanitation, and write a few things about it, and so on. Then explain your points and back up your claims with strong and evaluated evidence. Now you have to explain your points and back it up with strong evidence. The evidence can come from the facts and data collected in the previous researches. You can back up your suggestions with those too. जैसे कि अब आप अगर कह रहे हैं कि डिक्रीजिंग ओवर क्राउडिंग वुड डिक्रीज़ द प्रीवेलेंस ऑफ द डिजीज़, तो आप पिछले कुछ रिसर्चेस जो हुए हैं जिसमें उन्होंने ऐसे डेटा कलेक्ट की है जिससे ये साबित होता है कि हाँ डिक्रीजिंग ओवर क्राउडिंग वुड रिजल्ट इन डिक्रीजिंग द प्रीवेलेंस ऑफ टीबी, आप उस जगह से फैक्ट्स या डेटा लेके अपने रिसर्च में मेंशन कर सकते हैं. Now coming towards the conclusion, the last key element of report writing is the conclusion section. Present the conclusion as follows. The primary conclusion should come first. जो भी आपने रिपोर्ट में लिखा हुआ है, आप उससे जो चीज़ कंक्लूड करते हैं, जो आपके रिपोर्ट का मेन कंक्लूजन है, वो फर्स्ट में आएगा. आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रेट द मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द केस योर रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन. नाउ आपने जो अपने रिपोर्ट में लिखा है, जो केस आपने सेलेक्ट किया है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई की हैं, मेजर प्रॉब्लम्स आपने इंटरप्रेट की हैं, वो सारे आपने अपने कंक्लूजन में मेंशन करनी है. एंड देन रिलेट टू द ऑब्जेक्टिव्स दैट यू हैव मेंशनड इन द इंट्रोडक्शन. अब आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स और एम्स मेंशन किए थे इंट्रोडक्शन सेक्शन में. फिर उसके बाद आपने जो अपना रिपोर्ट लिखा, अपने रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आपने लिखी, वो जो आप अपने रिलेट टू द ऑब्जेक्टिव्स दैट यू हैव मेंशनड इन द इंट्रोडक्शन. आपने अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन में जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखी थी, और फिर उसके बाद आपने अपने रिपोर्ट में जो जो चीज़ें मेंशन की है उसको और उन ऑब्जेक्टिव्स को आपस में रिलेट करना है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए कि नहीं पूरे किए, और किए तो किस तरह से किए. कीप द कंक्लूजन ब्रीफ एंड स्पेसिफिक. और जिस तरह से आपने अपनी समरी और एब्स्ट्रैक्ट को क्लियर एंड कंसाइज लिखना है, उसी तरह से आपने अपना कंक्लूजन भी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक लिखना है. These are some sample headings. Sample headings are introduction, background to the issue, service changes, productivity improvements, future developments, conclusions, recommendations. But these are related to someone who has been related to or has been studying business. In the nursing, commonly used reporting in nursing are change of shift reports, transfer reports, incident reports. You are going to learn incident report writing in your next semesters, inshallah. Now, importance of report writing. Before you start writing a report, it is important to understand the significance of the report. Report writing has the following importance. Now you are going to see that why report writing is important. The first one is it is a decision-making tool. Organizations require a considerable amount of data and information on specific topic, scenarios, and situations. Managers and decision-makers often use business reports and research papers as information sources to make important business decisions and reach solutions. बिज़नेस में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर उसके बाद मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है रिपोर्ट राइटिंग के लिए कि वो रिपोर्ट राइटिंग करे, एंड दे शुड राइट एवरी पॉसिबल सोल्यूशन टू दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम. जो भी उनके माइंड में आता है, जो भी अल्टरनेट्स हैं, जो भी पॉसिबल सोल्यूशन है, वो सारे उस रिपोर्ट्स में मेंशन करें. इसी तरह से जब हमारे पास, हम अपनी फील्ड की एग्जांपल ले लें नर्सिंग की, इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग में अगर हमारे पास कोई इंसिडेंट हो जाए तो फिर हम अपने रिपोर्ट में मेंशन करते हैं कि वो इंसिडेंट क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. फिर उसके बाद हम रिकमेंडेशंस देते हैं, सॉल्यूशंस भी लिखते हैं उसमें कि क्या क्या ऐसी सिचुएशंस में हम ऐसी कौन कौन से चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व हो सके. सो इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग टूल. हम डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास क्या हो सकता है, एंड टू चूज़ द बेस्ट वन अमंग ऑल द प्रेजेंट अल्टरनेटिव्स. Professional improvements. During the annual appraisal cycle, your manager will ask you to write reports to explain your position, level of work, and performance. If you have ever wondered how your manager decided to promote your colleague and not you, the answer may lie in his well-presented report. Professional improvement के लिए भी
हर साल के बाद योर मैनेजर माइट आस्क यू टू राइट अ रिपोर्ट कि आप अपने पोजीशन को एक्सप्लेन करें, लेवल ऑफ वर्क को, अपने परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करें, एंड देन बाय रीडिंग दैट रिपोर्ट योर मैनेजर मे डिसाइड to promote you or whether someone that has presented their information really well. So report writing is really important in this case as well. Quick source for problem solving. There is no denying that managers require accurate information on various topics to make quick decisions. Often due to urgency, managers only rely on business reports as an authentic source of information. Almost every employee would have witnessed a situation that needed the manager's attention urgently. Reports come in handy during such situations. हम हॉस्पिटल की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हॉस्पिटल में एक कोई भी इंसिडेंट हो गया एंड दैट नीड्स अर्जेंट अटेंशन हमारे पास चाहिए. तो फिर हम इंसिडेंट रिपोर्ट्स में देखते हैं कि इससे पहले हमारे पास कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ, या अगर हुआ है तो उस टाइम कोई जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन था, या उस टाइम ऐसी कौन सी चीज़ की गई जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. सो दे रिलाई ऑन द बिजनेस रिपोर्ट्स एज वेल. किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो कि अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत हो, उसको मैनेजर्स रिलाई ऑन द बिजनेस रिपोर्ट्स, और इन द हॉस्पिटल्स वी रिलाई ऑन द इंसिडेंट रिपोर्ट्स to have accurate information and to make quick decisions. Evaluation. Different types of activities by different departments define an organization. Think of the department your organization has: development, sales, distribution, marketing, HR, and more. Each department follows defined process and protocols that require many small and large activities on a daily basis. It is impossible for the management to keep an eye on different activities in each department. That's where the reports can help. With every department writing and maintaining periodic reports, keeping a tab of ongoing activities become easier for the management. For example, hospital की example हम ले लेते हैं. Hospital is an organization too. Hospitals में हमारे पास different wards होती हैं. हमारे पास ICU होता है, आई वार्ड होता है, पीडियाट्रिक्स ले लें, साइकेट्री ले ले, बहुत सारी हमारे पास वार्ड्स होती हैं. एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप एन आई ऑन ऑल ऑफ देम, दैट वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन देम. सो हर जो है तो साल बाद या महीने बाद यू आर आस्क्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट अबाउट योर डिपार्टमेंट, एंड बाय रीडिंग दैट रिपोर्ट आपको आइडिया हो जाता है. आप एवेलुएट कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या क्या चल रहा है. सो यू आर आस्क्ड टू राइट अ पीरियोडिक रिपोर्ट्स, एंड उन पीरियोडिक रिपोर्ट्स को लेके फिर उन डिपार्टमेंट्स को एवेलुएट किया जाता है. Language of a report. Now how you are going to write a report and what would the language be? Your report should be specific, concise and clear. It should be understandable. The most important thing about a report is that it should be understandable. क्योंकि अगर आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं और रीडर को उस बात की समझ नहीं आती, सो आपका पर्पस तो कंप्लीट नहीं होता. देन व्हाट्स द पॉइंट इन राइटिंग अ रिपोर्ट. लैंग्वेज ऑफ अ रिपोर्ट. इट शुड बी स्पेसिफिक, कंसाइज एंड क्लियर लैंग्वेज. बिकॉज हम स्टार्ट में मेंशन कर चुके हैं कि रिपोर्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है दैट इज़ इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्मेट एंड दैट इज़ फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस एंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. तो जब आपने किसी ऑडियंस के लिए रिपोर्ट लिखी है और आपने लैंग्वेज ऐसे यूज़ की है जो उसको समझ ही ना आए, जो रीडर समझ ही ना पाए, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ योर रिपोर्ट राइटिंग. फिर आपके रिपोर्ट राइटिंग का जो फ़ायदा है तो वो तो नहीं हुआ, ना ही आपका पर्पस कंप्लीट हुआ, क्योंकि जिसके लिए आपने लिखा है उसको समझ ही नहीं आती. सो द लैंग्वेज यूज इन इट शुड बी स्पेसिफिक, कंसाइज एंड क्लियर. इट शुड बी कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट, दैट वन आइडिया शुड स्मूथली फ्लो इन टू एन अदर. एंड इट शुड बी एक्यूरेट. जो भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज आपने उसमें मेंशन की है, इट शुड बी एक्यूरेट एंड करेक्ट. And now coming toward the verb tenses, that what tenses are you going to use in your research report writing? So simple tense, usually the present simple to express facts, current actions and conclusion. Simple present tense हम universal facts के लिए हम simple present tense यूज़ करेंगे. जो भी हमारे पास facts हैं उनको हम simple present tense में लिखेंगे. current actions जो कि अभी हो रही हैं उनको, और conclusion that whatever you have concluded from your writing, from your report, इन सब चीज़ों को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे. पास्ट टेंस फॉर कंप्लीटेड एक्शंस एंड रेफरेंसेस. जो भी कंप्लीटेड एक्शंस है, फॉर एग्जांपल वी हैव कलेक्टेड डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफिक स्कूल, तो उसको मेंशन करने के लिए कि हमने इस डेट पे इस स्कूल से या इस हॉस्पिटल से, इस यूनिवर्सिटी से डेटा कलेक्ट किया था, तो दोज आर completed actions we have done in the past, so it should be written in the past tense. And references, for example, you have cited something in your research,
किसी अपने रिकमेंडेशन या कोई भी अपना पॉइंट उसको बैकअप करने के लिए आपने कोई और किसी और के रिसर्च से कोई चीज़ ली है, उसको साइट किया है अपने रिसर्च में, उसको ऐड किया है एज एविडेंस, तो उसको रेफरेंस करने के लिए भी या वो साइटेशंस या वो रेफरेंसेस भी हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट फॉर थिंग्स हैपनिंग इन द पास्ट अप टू नाउ। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ पास्ट में स्टार्ट हुई हो बट इट इज़ स्टिल कंटिन्यूस, अभी भी हमारे पास वो ख़त्म नहीं हुई है, प्रेजेंट में भी वो स्टिल कंटिन्यू है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ कोविड एंड वी हैव रिटन रिसर्च रिपोर्ट ऑन कोविड, तो हम कहते हैं कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है, इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 2019 एंड अभी 2021 में भी स्टिल कंटिन्यूस है, स्टिल केसेस आ रहे हैं, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेंशन करेंगे। एंड अवॉइडेंस ऑफ इमोशनल लैंग्वेज एंड jargon। अब हमारे पास हम इमोशनल लैंग्वेज जो है अपने रिपोर्ट को हम कहते हैं क्लियर एंड कंसाइज लिखना है एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमने उसमें मेंशन करनी है। वी शुडंट बी जजमेंटल, हमने जजमेंटल नहीं होना अपने रिपोर्ट में कि हमारे ख्याल से पॉइंट ऑफ व्यू है ये है। वी शुड जस्ट स्टेट द फैक्ट्स कि फैक्ट्स हमारे पास क्या कहती हैं या जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो हमारे पास क्या कहता है, और हमने कोई इमोशनल लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करनी है, ना ही इमोशनल होना है ना ही हमने जजमेंटल होना है अपने रिपोर्ट में। The active voice with short sentences and clear actors and actions using specific verbs and adverbs favored as in the company X considered the plan carefully। हमने एक्टिव वॉइस यूज़ करनी है क्योंकि रिपोर्ट हमारे पास जितना शॉर्ट होगा, जितना क्लियर और कंसाइज होगा उतना ही बेटर होगा। हमने शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करनी है और क्लियर एक्शंस हमने उसमें मेंशन करने हैं। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि कंपनी एक्स कंसिडर्ड द प्लान केयरफुली, कि हमने कोई प्लान तैयार किया था और फिर कंपनी एक्स ने उसको केयरफुली कंसिडर किया। सो वी शुड राइट शॉर्ट सेंटेंसेस लाइक दिस and avoidance of too many sentences starting with words like considering and having, instead briefly subordinating already known information as in since company X began operating in this region some issues have arisen that have impacted on the profit। और हमने ऐसे सेंटेंसेस नहीं लिखने, बहुत ज़्यादा ऐसे सेंटेंसेस नहीं मेंशन करने जो हमारे पास कंसिडरिंग या हैविंग ऐसे वर्ड्स से स्टार्ट हो। हमने जो भी हमने कहना हो या जो भी हमने इंफॉर्मेशन पहले कोई मेंशन की हो तो फिर उसको दोबारा हमने बस क्लियरली मेंशन करना है थोड़ा सा, कि जैसे कि एक्स कॉरपोरेशन यहाँ पे जो है तो उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, सो दे फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज विच हैव इम्पैक्टेड ऑन देयर प्रॉफिट एज वेल। सो वी शुड जस्ट सिंपली स्टेट द फैक्ट्स और सिंपली स्टेट इन शॉर्ट सेंटेंसेस कि हमारे पास क्या हो रहा है या हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स हैं या जो भी हम अपने रिपोर्ट में मेंशन कर रहे हैं उसको हमने शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखना है और क्लियर इन्फॉर्मेशन हमने मेंशन करनी है। So this was all about your report writing and we'll see you in the next lecture inshallah. Thank you.